Hello, everyone. Martu Mom is back today with a very interesting topic, a topic that affects a lot of us women, PCOS. PCOS is polycystic ovarian syndrome, and we have a doctor with us, Dr. Umesh Wadhavani. He's going to tell us a lot of what PCOS is. He's also going to explain to us how we can manage it and how we can deal with its side effects, which are not just physical, they are also mental. So he's also a mental health specialist. He's also a nutritionist. So we have somebody who's really special today. And a lot of you are going to enjoy not just listening to what he's saying, you're going to enjoy watching him also. You know why? Hi. He'll come on screen and you'll know why. Yes, there. Hi, Hi, Dr. Umesh. Nita. You Hi, are, hi, how are आप, you? आपको देख के ही थोड़ी आंखों को ठंडक मिलती है. You are already making me blush. How am I gonna go on and on with the session? No, it's not fair. But thank you so much. You are so kind. Thank you. How are Great. you? It's I'm very good. I'm very good, and it's really good to have you here with us today. And I Pleasure think is a all lot mine. of our audience is really waiting to hear all that you have to tell us because PCOS is something that is extremely painful and it affects many women. So yes, we want to know It a lot of what you have to say. So Yes, can we start it with indeed does. what is PCOS exactly? Uh, can we start with saying hello to everyone? I Because we will be talking about PCOS. We will be talking about PCOS and all the boring, dry stuff around ovaries and periods and all. It's gonna be fun. We will try to keep it fun. But I just wanted to say hello to everyone who has joined us, and thank you so much for letting me in to your Martu Mom family because it feels so special. So first of all, I wanted to say that, and now let's talk about PCOS. Let's talk about PCOS. So, as you already said, PCOS is like polycystic ovarian syndrome, right? But Nita, this is what I have practically, और मैंने है ना ये बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लिया हुआ है कि बीइंग अ डॉक्टर आई डोंट वांट टू यूज एनी jargons like polycystic ovarian syndrome. It's there, but उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं ना. Can you hear me, Nita, properly? मेरी आवाज आ रही है? Am I there? Hello. And I've just can you Yeah, yeah, hear sure. me? Now I can. Can you hear me? Yeah, I mean, Tejal is saying yes, but I think Nita cannot. So I just wanted to. Hi, thank you, Sunita. We will continue. So meanwhile, when Nita comes back, I want you all to type in your questions in the chat. I want you all to tell me what exactly do you want to know? What do you want to kind of take away from this session? So while we are waiting for Nita, let's get some comments going and anything like for next 30-45 minutes I will be covering all everything about PCOS and how you can manage using your ghar ka khana. But okay, so Tejal is asking what are the symptoms of PCOS. Very common, like the most common thing is irregular periods. um, and but irregular periods is something बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि what is the regularity. And me being a man talking to a lot of women saying this, it's a big statement. But genuinely, like जब भी मैं बहुत सारे clients के साथ मिलता हूँ ना, तो मैं उनसे like मेरे assessment form में ही है कि how are your periods like, and they were like regular. And then I was like मुझे पिछले 6 महीने का पैटर्न बताओ. And वहां पे पता चलता है कि it's not regular. Okay, so we will thoda sa go into the details as well ke period, but these are the symptoms: irregular period, unwanted hair, facial hair आ जाते हैं, and hair fall होता है, acne होता है, you find it difficult to sleep, sugar cravings, a lot and a lot of them, like you want to eat tubs and tubs of ice cream throughout the day. Uh, then yeah, these and of course weight gain.
You find it really difficult to lose weight. So these all are the symptoms of PCOS. पर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जैसे नेताजी ने पूछा था about what is PCOS, right? तो पीसीओएस है ना, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पोली का मतलब है बहुत ज्यादा, सिस्ट का मतलब है वो ठेलियां, छोटी छोटे ठेलियां। ओवरी इज द ऑर्गन दैट women का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड सिंड्रोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस। ओके, तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर तुम्हारी ओवरी के अंदर छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं ना। यूल बी लाइक, थैलियां बन रही है तो अच्छी बात है ना, हम उनको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए यूज कर लेंगे। व्हाई इज इट कॉजिंग अस अ प्रॉब्लम? थैली बन रही है, बट सो व्हाट इट्स डज इज कि वो थैलियां बन के बाहर नहीं आ रही है, वी कांट यूज इट, दे आर स्टिल देयर, है ना। दे आर देयर, एंड व्हाट दे डू इज दे ऑब्स्ट्रक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ओवरीज। तो ओवरीज का काम है तुम्हारे पीरियड्स को मेंटेन करना, ओवरीज को काम है तुम्हारे बाकी के सारे हार्मोन्स के लिए डोमिनो इफेक्ट देना, राइट। तो जैसे ही वो थैलियां बन जाती हैं अंदर, तो दे प्रिवेंट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ओवरी। ओवरी सिस्ट बड़े होते जाते हैं, जितना बड़ा होगा उतना सिम्टम्स तुम्हारा बढ़ता जाएगा। नाउ दे हैव इफेक्ट ऑन अक्रॉस योर सिस्टम। इंसुलिन का प्रॉब्लम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तुम शुगर को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं, ऑल दैट। तो इन इन लाइक सिंपलेस्ट टर्म्स, तुम्हारे ओवरीज के अंदर कोई ठेलियां रख रहा है, कौन से रीजन से रख रहा है वी डोंट नो, उसकी वजह से ओवरीज का काम सही से नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो तुम्हें ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, राइट। नाउ so that is the basic of PCOS. Did it make sense, Nita? It made a lot of sense. It made a lot of Yeah, sense, but it also brought up one question. sure. Then what causes this? What causes this to Hmm. happen? ओके, मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है, बट देर आर स्टिल लिमिटेशंस, राइट। तो अभी तक गायनेक्स को भी नहीं पता है, मेडिकल इंडस्ट्री को नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन। जैसे कोविड में पता है कोरोना वायरस से कोविड हो रहा है, साल्मोनेला Hmm. टाइफी से टाइफॉइड हो रहा है, Hmm. बट वी डोंट Correct. वी डोंट नो कि पीसीओएस क्यों हो रहा है। बट what we have done is we have found a pattern, like जितने लोगों में भी PCOS था ना, there were Hmm. three things which were common amongst all of them. Okay, Okay. सबसे पहला Hmm. इंसुलिन Hmm. रेजिस्टेंस, Okay. दूसरा फिजिकल इनएक्टिविटी, Hmm. एंड तीसरा स्ट्रेस। Okay. ओके, Okay. सो पहले दो को लोग शायद इंपॉर्टेंट दे देते हैं। सो इफ पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, उनमें से कुछ लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस को न्यूट्रिशन से मैनेज करने की ट्राई करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ टू डू इट एज वेल। उसके बाद कुछ लोग Hmm. होंगे जो एक्सरसाइज करेंगे। सो गायनेक्स के पास जाओगे तो गायनेक्स आर गोइंग टू टेल यू दिस थिंग, कसरत Hmm. करो, वजन ओछू करो, that's it, like exercise, lose your weight. Hmm. But baba, how? Hmm. Because the third Hmm. factor is stress. Hmm. Stress it could be because of your joint family scenario. If you are a housewife or a homemaker, you have some rift going on with your husband, you have some sort of other issue, because PCOS is connected with infertility as well. So it's one of the biggest reason why one cannot conceive. तो वो एक और एडेड स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि Hmm. शादी हो Hmm. गई है, और शादी के बाद बच्चे का भी एक्सपायरी डेट आ जाता है कि 1-2 साल में हो जाना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। Correct. We all have Hmm. these very unique issues which are country Hmm. oriented। और कोई देश में हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं मिलते, ये हमारे देश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, राइट। कि और दे आर एडिंग मोर स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस को हमने कभी भी एड्रेस नहीं किया, हमने कारपेट के अंदर डाला हुआ है ऑलवेज। कुछ नहीं होता, 12वीं खत्म हो जाएगी, Yes. सब ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, बच्चा पैदा कर लो, ठीक हो Yes. जाएगा, घर खरीद लो, लाइक इट्स ऑलवेज सबसे ठीक हो जाएगा। There. यहाँ भी क्लासिक Hmm. मम्मी लोगों का होता है कि मोबाइल फोन पे पूरा दिन रहते हो ना, इसकी वजह से तुम्हें स्ट्रेस You're right. है सो Everybody says that. Yeah, yeah, yeah. There is या always all kinds या of things. और कभी ऑल कभी तो काइंड ये भी नहीं होता है कि स्ट्रेस है, ये पता भी नहीं होता है. We don't even realize that ओके, we have stress. वी डोंट। नाउ Yeah. चलो बात करते हैं उसके बारे में, Hmm. उसके बारे में बात करते हैं, राइट। बिकॉज Okay. न्यूट्रिशन Yes. एंड एक्सरसाइज तो हम बात करेंगे ही करेंगे, but स्ट्रेस इज समथिंग which is Hmm. very Hmm. important. Okay. um how many times we check our phones without
हाँ, हमारे फोन के नोटिफिकेशंस भी चालू होते हैं, उसके बाद भी वी आर जस्ट ओपनिंग इंस्टाग्राम और फेसबुक थ्रू आउट द डे, जस्ट टू चेक कि कुछ नया आया है कि नहीं आया। Okay. Now, I'm Yes, not saying 100%. we all have mental health issues. I'm saying Hmm. it's one of the signs of you going through anxiety or stress, because uh, you can't deal with the present moment and you are trying to find escape somewhere. And social media and Hmm. food, these two are the more easiest escape mechanisms. तुम कुछ खाना खा लोगे, किचन Hmm. पास में ही है, लिटरली अ फ्यू स्टेप्स अवे, यू विल जस्ट गो। वर्क फ्रॉम होम हैज मेड इट रियली वर्स। जब भी बोर हो रहे हो, कभी भी कोई भी सिचुएशन से तुम डील नहीं कर पा रहे हो, फूड इजी डोपामिन, तुम्हारा मोबाइल फोन नोटिफिकेशन इजी डोपामिन, वन ऑफ द साइंस। इफ यू आर Absolutely. ड्राइविंग इफ यू आर Hmm. ड्राइविंग अराउंड लाइक, एंड हमने फोन वो डैशबोर्ड पे लगाया होता है, राइट? Hmm. And Yes, absolutely. let's say you see a WhatsApp message from your partner. Okay. तुरंत से, Now, तुरंत से, हाँ, yes, तुरंत से, तुरंत yes. यू नीड टू रिस्पॉन्ड तुरंत। ऐसा नहीं है कि कुछ अंबानी की फैमिली, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बंद हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। इट्स लिटरली कि बेबी शाम को हम क्या देख रहे हैं, शार्क टैंक देख रहे हैं या डीकपल्ड का एपिसोड देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। And you want to reply, if you Right get away, that yes. urge, if you get that Yes. urge कि मुझे अभी का अभी रिप्लाई करना है, that is clearly a sign of anxiety. Okay. So Okay, okay. but again, at the same time, Neeta, I just want to assure everyone कि Hmm. mental health का जितना बड़ा conversation शुरू हुआ है, और Hmm. जितना हम बोलते हैं कि mental health important है, वो है important, but वो इतना Hmm. बड़ा नहीं है. We don't have to create that hawa around in our head. Hmm. Hmm. It's Hmm. Hmm. Correct. सेम लाइक फिजिकल हेल्थ में अलग अलग इश्यूज होते हैं ना, कि अभी जैसे किसी Hmm. को भी Hmm. छींक आ रही है तो वी आर थिंकिंग कोविड। Hmm. Right. तो इन इन मेंटल हेल्थ एज वेल, लाइक तुम्हें अगर कोई चीज से स्ट्रेस हो रहा है, डजंट मीन तुम्हें डिप्रेशन हो गया है, या तुम्हें सिजोफ्रेनिया हो गया है, या तुम्हें बाइपोलर है, या समथिंग अलोंग दैट लाइन। बिकॉज Hmm. Hmm. इवन इन मेंटल हेल्थ देयर आर स्केल्स। लाइक एक एक तुम्हें सरदर्द एक गंदी मूवी देखने के बाद भी हो सकता है, और सरदर्द तुम्हें मेनिंजाइटिस के बाद भी हो सकता है। तो तुमने Right. तुमने रेस 3 देख ली, उसके बाद तुम्हें सर दर्द हो रहा है, डजंट मीन कि तुम्हें ब्रेन इन्फेक्शन है। You know what I mean? Yeah, So this, we don't have. yes, yes. Yeah, go on. Sorry. The, Yeah, no, sorry. no, I was just saying that, yes, the person who loves cinema is now showing up. We are happy about that, Yes. yes. Huh. Thank you. So Yeah. basically, that's what I'm trying to say. कि stress, if you are dealing with stress, you Hmm. should give it importance, but you shouldn't create a hawa around it. Find Hmm. some coping strategies to it. And if Okay. someone Hmm. needs it, we can talk about that too. But let's carry this Okay. conversation forward. Let's go for the next Okay. question. Hmm. Okay. So there are some people who are asking, does irregular periods mean that it is PCOS? Is it a symptom of PCOS? Hmm. So irregular So, periods, yes, it is a symptom of PCOD or PCOS, but hmm. सिर्फ वही सिम्टम है, और उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पीसीओडी है. Hmm. So Hmm. you Okay. need to have 3+ symptoms for over 3 to 6 months. उसके बाद भी Okay. you gotta go and see a gynec, check your USG, सोनोग्राफी करवाओ, देखो कि ओवरीज के अंदर सिस्ट है या नहीं है, गेट योर ब्लड रिपोर्ट्स डन, सी तुम्हारा Hmm. हार्मोनल लेवल ऊपर नीचे है या नहीं है. अगर Hmm. इसमें से कुछ भी नहीं करना है, जो भी आज मैं Hmm. तुम लोगों को टिप्स दे रहा हूं ना, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम. Hmm. Hmm. अगर तुम्हारे पीरियड्स इरेगुलर हैं, या अगर तुम्हें शुगर क्रेविंग्स बहुत होते हैं, या तुम्हें अगर फेशियल Hmm. हेयर है एंड स्टफ, ठीक है, Hmm. बट वी विल Hmm. टॉक Hmm. अबाउट. Okay. So you mentioned PCOD here now. Is there a Hmm. difference between PCOS and PCOD? नो. मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, हमें Hmm. जानना वो जरूरी है, क्योंकि हम जब पढ़े Hmm. थे तो हमें वो टेक्निकलिटी हमें पता हो तो अच्छा है. आप सब लोगों के लिए, आई जस्ट डोंट वांट यू टू गेट इनटू दैट कंफ्यूजन. सो पल्लवी हैज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. Hmm. Same question, yes. Hmm. पीसीओएस और पीसीओडी में एक लेटर का डिफरेंस है. एस मतलब Hmm. सिंड्रोम, डी मतलब डिजीज, राइट? Hmm. डिजीज Hmm. 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 इज वन कंडीशन, सिंड्रोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस. Okay. ओके. Okay. बट Hmm. जब भी किसी को ओवरीज में सिस्ट होते हैं, तो कभी भी वो एक सिम्टम तक लिमिटेड नहीं होता. इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस.
एंड Okay. अगर तुम ट्रीटमेंट भी Okay. उसका ले रहे हो गायनेक के पास जाके, तो इट्स अबाउट Hmm. ट्रीटिंग द सिम्टम। तो अगर आपको फेशियल हेयर है तो उसके लिए आपको मेडिसिन मिलेगी, हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए मेडिसिन मिलेगी, पीरियड्स इरेग्युलर है तो आपको बर्थ कंट्रोल पिल पे डालेंगे। सो दिस इज ऑल Hmm. सिम्टमेटिक, नो वन इज ट्रीटिंग द पीसीओएस or Hmm. PCOD. We will be using this interchangeably. If you Hmm. want to, if you want to manage your PCOS now, there is only Hmm. one way. It's the lifestyle change. It it's Okay. like end of. There is no, because there is no treatment for it. Okay. There is no treatment Okay. for it. Yeah. Okay. Okay. So now it affects, yes, it affects the ovaries, and Hmm. because, like you said, it has things to do with stress. So that means it Hmm. affects the mental health in some way or the Hmm. other. Now, Hmm. you're saying we don't need medicines, we can manage it with a lifestyle change. Hmm. Can the stress, can the uh, mental health issues that come with it be managed also with just the lifestyle change? 110%. Okay. 110%. Okay. Okay. Because let's say, all right, simple example. Hmm. सेरेटोनिन करके हार्मोन है, सुना है उसके बारे में तुमने? हाँ हाँ सुना है. या सेरोटोनिन के सेरोटोनिन, बारे में सुना है. या डोपामिन, या सेरोटोनिन, ऑल दिस. यस यस. सो दीज फोर आर द एवेंजर्स हम्म. हमारी बॉडी हम्म. के मेंटल हेल्थ के। हम्म. डोपामिन, हम्म. एंडोर्फिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, करेक्ट. दीज हम्म. फोर आर हम्म. दीज फोर हम्म. आर हमारे एवेंजर्स हैं। वो सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से हमें प्रिवेंट करके रखते हैं। उसमें से सेरोटोनिन इज लाइक द मेन गाय, ओजी। ओके, ओके. नाउ सेरोटोनिन, लेट्स से तुम, वी ऑल से कि हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए रोज, राइट? हम्म. करेक्ट. वी शुड बी यस. थैंकफुल अबाउट थिंग्स दैट हमारी लाइफ में अच्छे हो रहे हैं। वी शुड बी डूइंग दैट। हम्म. व्हाई? बिकॉज जब भी तुम किसी भी चीज के लिए थैंकफुल होते हो तो तुम्हारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है एंड यू फील गुड। हम्म. हम्म. ओके, so ओके. there's a scientific ओके. connection. Always ओके. also, हम्म. when we talk about depression, तो डिप्रेशन में क्या होता है? हम्म. डिप्रेशन में तुम्हारे सेरोटोनिन लेवल कम होते हैं हम्म. ओके. clinically. The reason why I'm ओके. talking about serotonin is because serotonin is the one which manages and maintains your mental well-being. तो जो तुम्हें अच्छा फील हो रहा ओके. है ना, let's हम्म. say you spend some good time with your partner, or you got a हम्म. appreciation from your parents, or you got a really good result in something. तो हम्म. उसकी जो अच्छी हम्म. फीलिंग है उसको मेंटेन रखना है ना हमें। तो वो काम हाँ. सेरोटोनिन का है, योर जनरल मेंटल वेलबींग को मेंटेन करने का काम। प्लस ओके. हम्म. आपकी हम्म. आपकी सेक्स लाइफ, आपकी मेमोरी, योर एबिलिटी टू लर्न अ न्यू थिंग, ये सारी चीजें हम्म. सेरोटोनिन मैनेज करता है। ठीक है, कैन हम्म. यू ओके. गेस कैन यू गेस हम्म. हमारी बॉडी में, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन, कैन यू गेस हमारी बॉडी में सेरोटोनिन कहां से रिलीज होता होगा? ब्रेन से. रैंडम गेस, यू डोंट हैव टू थिंक। हम्म. हम्म. द लॉजिकल, ब्रेन से, हम्म. राइट? हम्म. राइट? हम्म. हम्म. व्हाट इफ आई वाज टू टेल यू के ना, it it नो. gets it ओके. gets released from your intestines. ओह. ओके. ओके. 90% से ज्यादा serotonin gets released from intestines, your gut. Okay, now ये जो अभी मैं अगले 1-2 मिनट में बोलने वाला हूँ, it can't be going to be a monologue, but it may हाँ. scare you थोड़ा सा, but I'll bring you back to the comfort place in a sec, yeah? ओके. ओके. जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो वी नेवर रीच आउट टू सैलड, वी विल रीच आउट टू समथिंग अनहेल्दी, जंक, स्वीट, cookies, pastries, brownies वेरी ट्रू. and stuff, right? आइसक्रीम. Yeah, यस you यस did यस. that. Now that messes या. up with your gut health. ओके. गट ओके. हेल्थ मेसअप हुआ तो तुम्हारा सेरोटोनिन लेवल कम हुआ, सेरोटोनिन लेवल कम हुआ तो तुम्हारा मूड वापस से खराब हुआ, मूड वापस से खराब हुआ, तुमने वापस से ब्राउनी खाई, ब्राउनी खराब खाई, गट हेल्थ खराब हुआ, गट हेल्थ खराब हुआ, सेरोटोनिन सेरोटोनिन कम हुआ, मूड खराब हुआ, मूड खराब हुआ। ओह. ओके. विशियस सर्कल. ओके. This is a vicious circle. So हाँ. when you ask me whether lifestyle affects your mental health, this is just only one connection. There are so many connections. This was हम्म. चलो थोड़ा सा scary, right? Let's go हम्म. opposite. You हम्म. work out for 20 minutes, हम्म. endorphins are flowing in your body. How do you feel? करेक्ट. ऑसम. Amazing.
Yes, right? absolutely. So what you did, you just Yes. added 20 minutes of movement to your lifestyle. You're Hmm. starting to feel better. And Hmm. these are the two brilliant connections right here. So many other things. Okay. Hmm. I think this has been the most convincing argument that I've heard that Hmm. says okay, exercise is worth it. अभी तक और Yes, कोई आर्ग्यूमेंट इतना अच्छा नहीं 110%. था. Yes, it has been. Yes, very true. 110%. And Hmm. Anita, मैंने है ना, I've heard this thing. uh, but I'm not sure how common it is, but अभी मैं एक specific demography के साथ बात कर रहा हूँ, तो let me ask this question. मैंने ऐसा सुना Hmm. है कि this is a basic difference between guys and girls, men and Hmm. women, okay? कि Hmm. Okay. लड़कियों को खाना बड़ा पसंद है, नहीं, Hmm. लड़कियों को खाने से इतना लगाव नहीं है. दे आर लाइक के Hmm. हमें खाना कुछ भी खिला दो, हम डाइट में कुछ भी कर लेंगे, पर हमसे वर्कआउट मत Hmm. करवाओ. एंड इट्स Okay. द ऑपोजिट फॉर गाइस. इज इट ट्रू? हाँ. इज इट ट्रू? Um. लाइक ये ग्रुप में से, आप में से किस किस को वर्कआउट करना नहीं पसंद है? दिल पे हाथ रख के सच सच बताना है, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी. See, I would love to go for a walk, but कोई बोले जिम में Hmm. चले जाओ तो no. नहीं. Okay, Tejal is saying no, I Hmm. don't like it, which is, I don't see, like. honest, Yes. honest. Can we get Honest. more Yes. answers? Yeah. Hmm. Okay. What did you say, Nita? You enjoyed walking, but you don't like Walking. going to gym. Hmm. Yes. Ah, Okay. yes. Yes. Exactly. See, Jyoti is also saying walk is good. No gym. Okay. Awesome. हाँ. Awesome. 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 All right. So here is a really happy news for all of you. If you don't like हाँ. working out, Hmm. perfect. That's completely fine. Okay. हाँ. How about Hmm. you find your own mojo? Because Okay. when we say Hmm. workout, हमारे दिमाग में है ना एक बल्ब जलता है, and that bulb has a picture Hmm. of a woman who is very skinny, wearing really tight clothes, working out in her home or in the gym, lifting some weights. This is the image we have. Yes, absolutely. Yeah. Absolutely. वो leotards पहन Ye- के एकदम yes. fit. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. This is the image we have. Yes. I want you Yes. to take that image out of your head and just throw it away. मुझे तो पता नहीं चलता कौन सी चक्की का आटा खाते हैं वो लड़कियां, बिकॉज वर्कआउट करने के बाद पसीना होता नहीं है, उनका मेकअप वेकअप निकलता नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं वो लोग. आई हैव नो आइडिया. ओके. सो सो Very true. See, सो Tejal is saying she's very much with you. या सो हमें वो तो निकाल देना है. राइट नाउ वर्कआउट का मतलब ये है कि यू डू Hmm. समथिंग फिजिकली विच इज मोर देन Hmm. योर डेली चोर्स. सो हम सबका एक Okay. ऑटोमेशन है ना. हम सुबह उठते हैं, ब्रश Hmm. करते हैं, पॉटी वॉटी हो गया, नाश्ता किया, ऑफिस का काम, बच्चों को तैयार किया, ये वो, ये हमारा पूरा रूटीन है. Hmm. एंड Hmm. उसमें Correct. फिजिकल एक्टिविटी लगता है. राइट मैं बोल रहा हूं कि उससे थोड़ा ज्यादा, 20 minutes a Hmm. day, Okay. you have to move. Now that can be a walk. If you like walking, go for a walk. If you Okay. like jogging, go for a jog. If you like running, run. Hmm. If you like cycling, cycle. If you like playing badminton, play badminton. If you have kids, if you want to play with them, play with them. If you have a pet, go for a Hmm. walk with your pet. If you like Zumba, Zumba, yoga, yoga. If you like dancing, Hmm. dance. If you don't Hmm. like dancing, if you like dancing, but if you don't know how to dance, अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, loud Hmm. music बजाओ, and just jump around. That's No one great. That has to actually feels see. very good. That feels No so one good has to that see. है ना? कुछ भी चलेगा. हाँ, कुछ भी कुछ भी चलेगा. Yes. चलेगा, कुछ भी चलेगा. हाँ. एंड आई एम नॉट, मैं उन एक्सरसाइजेस को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट सेइंग कि जिम Hmm. जाना इज अ बुरी बात. और आई एम Hmm. सेइंग फाइंड योर ओन मोजो. अगर आपको जिम Hmm. जाके लिफ्ट करना अच्छा लगता है, डू दैट, अमेजिंग. Hmm. बट इफ यू Hmm. डोंट, you are not going to be sustainably follow that. जिम वाला, लाइक Hmm. लेट्स से तुमने ऋतिक रोशन या शिल्पा शेट्टी का ट्रेनर मिला है, Hmm. राइट, किसी ने स्पॉन्सर किया Hmm. हुआ है, वो कितना Hmm. भी Hmm. अच्छा Hmm. डाइट प्लान तुम्हें लिख के दे दे, कितना भी अच्छा वर्कआउट प्लान करना तो तुम्हें है ना Hmm. एंड में, बट इफ यू डोंट एंजॉय इट, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट. You're not going to do it. Very true. Absolutely right. तो find something that you love doing and you will be looking forward to that the next day. कि शाम को 6 बज चुके हैं, अब मैं दरवाजा बंद करूंगी and I'm going to dance on Fevicol, Saiya and
Munni Badnaam Hoye or whatever you want to dance on. We can do that. Awesome, awesome. This feels really Yeah. good, you know. It kind of lifts that whole एक्सरसाइज तो करनी चाहिए वाला एक प्रेशर जो होता है ना सब पे, वो थोड़ा Hmm. निकल जाता है. Yes. That's Yes. really really good. Yeah, Yeah. this is So this is that's nice. So that. yeah. Hmm. So now there's one more question that I that just came to me. Hmm. This affects women. Now, at what Hmm. age does it start? Can it be? I mean, can it be affecting girls who've just started menstruating, or even before that, or is there a certain age when this starts? No, not before that. Uh, Hmm. so menarche to menopause. So once you Okay. start your periods to the Hmm. menopause. Okay. Okay. Hmm. It happens then. And when it's Sorry. with अभी नहीं. आधे घंटे के बाद. Sorry. Sorry, my bad. no Yeah. worries. So Hmm. so if it now I have a daughter who's 16 years old. Hmm. So Hmm. I feel, if she has, supposing it so Hmm. happens that she has PCOS, uh, Hmm. I know that it would be more difficult for me to deal with it than if I had Hmm. it myself. Okay. Yeah. Ek Hmm. to seeing a child go through that pain itself is a problem. Then Yeah. sometimes explaining to the child that this is what is required from you. Hmm. They're not all that willing to change the way they eat or the way they behave. Hmm. So how do you Hmm. manage that? I think storytelling. Hmm. Hmm. Okay. You have to. You have to. You have to Hmm. fit in the advice into the narrative. Okay. ठीक है. तो Okay. Hmm. so first of all we have to ये जब भी when we talk about healthy eating now we have to change the Hmm. spotlight or the conversation from Hmm. from the whole aspect of कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना ये नहीं करना वो नहीं करना है to Hmm. ये Hmm. करना है भले करो बट ये भी करना Hmm. है ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है because uh, Hmm. evolutionary human beings का brain is designed in a way Hmm. कि Hmm. तुम कभी भी उनसे कुछ छीनने की ट्राई करोगे ना तो हम Hmm. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे चले जाते हैं यू डोंट लाइक समथिंग टेकन Hmm. अवे फ्रॉम यू बट इफ यू आर गिवन Absolutely. समथिंग if you're Hmm. given something you feel good about it now it's such a easy way to trick your psyche Hmm. because you all get sugar cravings. Let's say maggie is a kind of sugar, by the way, just to break it out all Hmm. to all of you. Maggie is Hmm. sugar, भले वो Okay. मीठा नहीं है Huh. तो मैगी अगर किसी को खाने की इच्छा है तो मैगी इज अ शुगर एंड शुगर क्रेविंग हमें क्यों होती है it's Hmm. happened because of a reason so once you start adding foods which are fixing that reason Hmm. उनको ऑर्गेनिकली शुगर खाने का मन नहीं करेगा so Ah. instead of Okay. focusing on कि क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है how about we focus on कि क्या करना है Hmm. add those food groups in your diet उनको वो खाने का Hmm. मन ही नहीं करेगा अपने एंड यहाँ पे तुम कुछ टेक अवे नहीं कर Awesome. रहे हो तुम कुछ डाल रहे हो Hmm. और वो जो चीज Hmm. डाल रहे हो उनके फ्लेवर के हिसाब Hmm. से टेस्ट करो सो let's say Okay. Hmm. Hmm. let's say one of the common reasons or one of the common tips that I give for sugar craving people is कि Hmm. increase your protein intake. Hmm. Hmm. Okay, Yes. जैसे ही Okay. तुम प्रोटीन Okay. इंटेक बढ़ाओगे फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स तुम्हारा शुगर क्रेविंग विल कम डाउन तुम्हें ऐसे Okay. जबरदस्ती कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी Acha. तो Okay. This is हाँ very interesting. Okay. Hmm. एंड एंड अगेन जितने लोग भी हमें देख रहे हैं दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड यू गाइस कैन कम Hmm. एट मी बाद में कि Hmm. उमेश तुमने रिकॉर्डिंग में ये बोला था ऐसा क्यों नहीं हुआ आई एम ओपनली Huh. चैलेंजिंग यू ओके यू Okay. स्टार्ट एडिंग मोर प्रोटीन्स टू योर डाइट फर्स्ट वीक में तुम्हें डिफरेंस ना दिखे तो यू कम डाउन Huh. मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे को गालियां निकाल Okay. सकते हो बिंदास ठीक है एंड आई एम इट्स सच अ Okay. सिंपल थिंग सच अ सिंपल थिंग सो ट्राई इट आउट बट उसके लिए हमें So for जानना पड़ेगा hmm. Hmm. कि हमें रोज का कितना Yes. प्रोटीन चाहिए बिकॉज इंडियन ऑडियंस वी आर नॉट इवन कंज्यूमिंग 20% ऑफ आर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स वी आर नॉट Okay. so Okay. that's a completely different conversation but let's see if that's the route we are taking
Okay. Okay. So you're now, see, for vegetarians like Hmm. us, I mean, protein is basically coming from maybe pulses and I don't know, dals and whatever, kathod Hmm. and whatever. So how do Yeah. we, I mean, is that good enough? Yes, those are the sources. Now, if you guys want the whole list of vegetarian food list, just मुझे WhatsApp कर Hmm, देना या मुझे Instagram पे hit करना. I have a whole PDF. awesome. Okay. Okay. But Okay. there are so many other sources like चना. Hmm, चने के इतने सारे hmm, प्रकार हैं. काला चना, काबुली hmm, चना, हरा चना. hmm. ठीक है? Then choli, Okay. then different Hmm, lentils, your paneer, your dahi, hmm. your soy products, your tofu, almonds, walnuts, peanuts, chia seeds, flax seeds, quinoa, Okay. buckwheat, Okay. sattu. So the list Okay. goes on and Hmm, but उससे पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि when it comes to proteins, hmm, there is a specific demand hmm. कि तुम्हें 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए एवरी डे. Okay. तो Okay. अगर आप आई विल नॉट बी दिस विल बी अ रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क इन दिस ग्रुप कि आपका वजन कितना है. Completely wrong, inappropriate question. So you know the answer. You you know the answer to that question. But Huh. multiply it with 1 and that's the minimum. Workout कर रहे हो Hmm, नहीं कर रहे हो, hmm, this is just to run your machine or the body efficiently hmm, in healthy hmm. way. That's what you need. तो अगर आप 60 kg के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 50 के हो तो 50 ग्राम प्रोटीन ऑन अ डेली बेसिस चाहिए. That's that. Okay. And and अभी भी बहुत सारे. Yes, formula is simple बाबा. One Hmm, and two. hmm, That's it. hmm, Simple. hmm. Okay. But I want to reiterate this thing because बहुत सारे लोग मुझे सुनेंगे अभी and they will like okay 50 ग्राम. But Hmm, frequency नहीं बढ़ने वाला है उसका. तो I wanted to just use this simple analogy right here. hmm. Uh, do we know the difference between the words request and demand? We- yes. Yes, Yeah. रिक्वेस्ट में मना कर सकते हैं. Yes. Hmm. So let's Hmm. say if I like your glasses, I'll be like, Nita, हाँ. can I please have your glasses? मैं एक फोटो Hmm, वोटो खींच hmm. के वापस से आपको दे दूंगा. Right? हाँ. हाँ. That is request and Yes. demand is like Nita, मैंने आपके लिए live किया है. I want that. वो glasses मुझे चाहिए. बात खत्म ग्लासेस हो गई. That's my चाहिए. demand. Hmm, Right? hmm, So hmm, hmm, hmm. so it's like request is me asking something for politely, like some for Hmm, something, and hmm, demand is authority के साथ. hmm. Right. Okay. Yes. So when it Yes. comes to proteins, especially, your body has supply and demand ka relationship. It's not supply and request. So your body is not like Tejal, please मेरे को 50 ग्राम प्रोटीन देना, प्लीज मेरे को चाहिए. सीधा मेरे को चाहिए रोज का रोज 50. अगर नहीं देगी तो प्रॉब्लम, पीसीओएस, थायराइड इश्यू, शुगर क्रेविंग्स, एनर्जी, हीमोग्लोबिन इश्यू सब में देगा. मेरे को चाहिए. हाँ. That's the just so that you all understand, it is extremely important. It's not negotiable. It's not negotiable. Okay. कि उमेश, हाँ. Okay. So that's the deal. Yeah. I think you made that point very, very clear. Thank you. I just समझ wanted में to आ say गई. that. Okay. Okay. Great. Mhm. Great. So Yeah. let me see. Does anybody have any questions? Please put your questions in the chat so we can ask doctor for any more clarity that we need. It looks like you're making things really very clear because everyone's saying समझ गए, समझ गए, समझ गए. मुझे डर भी लगता है कभी कभी के अंदर अंदर लोग मुझे गालियां ना निकालते हो कि ये बंदा नहीं. हमारा Are you मजाक नहीं. are you seeing I'm that? no, I'm just saying कि I Uh, like to think make things थोड़ा सा in humor because humor makes things palatable. It doesn't mean I'm mocking your habits as such. It's I think humor makes things accessible. That is the only reason I just joke around. But this is how it is. Yeah, reality is reality. It's there. Uh, yeah, yeah, okay, yeah. Taran ji is asking, is it? Yes, it affects Does it? fertility. It is. It's one of the most Hmm, common reasons why people find it difficult to conceive. One of the most common. And जितना common है ना उतना easy है उसको reverse करना. That's the thing.
in theory it's easy, it's literally on plate, but वो चीजों को है ना अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करना, दैट्स वेयर थोड़ा सा दिक्कत आती है, दैट्स वेयर द पीपल, मेरे जैसे लोगों का रोल आता है टू coach you in a way so that you can follow everything in a sustainable way. So yeah, that's that. Awesome, awesome, awesome. Hmm. So I'm sure that you will be getting a lot of requests from some people from our group. They're saying you're amazing. Yes, thank you so much, thank you Rani, thank you Hema. Yeah. Okay, Okay. Yeah. Taran is saying, is there any homeopathy treatment for PCOS? huh. um how do I say, I mean, I can get into controversial वहां पे थोड़ा सा okay, so I have studied homeopathy, right? I've studied homeopathy. Homeopathy, a lot of things work in homeopathy as a placebo. It can work I agree. because homeopathy consultations are very psychological basis, so we go through a Right. lot of details of your psychology, right? And that conversation eases out your stress, wo pressure thoda reduce karta hai, right? So that can be helpful. But let's say you are just taking homeopathic pills and your lifestyle is off the toss completely, you are not going to manage your PCOS because um, um, हमने वो 3 रीजंस के बारे में डिटेल में बात नहीं किया ना, जो स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो फिजिकल इनएक्टिविटी, तुम्हारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी था, उसकी वजह से वो हुआ है. तो अगर तुम तुम्हारी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी नहीं डालोगे तो वो चीज रिवर्स नहीं होने वाली है. तुम्हारी लाइफ में अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को तुम जब तक मैनेज नहीं करोगे तब तक नहीं होगा. सो अ पिल, इवन एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू if your lifestyle in general is not in match. Okay. Yeah. Okay. So basically, what you're saying is you can do whatever else you like, but you have to manage your lifestyle to manage PCOS. Yes. You Yes. can add on all the other things, but you have to do Other this things. first. Yep. Okay. Yep. Okay. So it's basically the lifestyle change that will work wonders in this situation. Okay. Because there is no other way. And okay, can I use another analogy? Acha Please. wala. Do we have Yes, time? yes, please. We have time. Okay. Yes. All right. So मैं जब तक ये स्टोरी सुना रहा हूँ तब तक आई वॉन्ट यू ऑल टू टाइप योर फेवरेट कार्स इन द चैट. लाइक आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज योर ड्रीम कार. इफ नीता, तेजल एंड मी, हम आपके लिए कोई कार स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो विच कार आर यू गोइंग टू बाय? प्लीज टाइप इट इन द चैट. या ओके. Okay. सो नाइस, बीटल आ गया है. लेट्स से हमारे पास बीटल है, राइट? और बीटल पेट्रोल पे चलता है, और हम वो बीटल लेके निकले हैं मस्त में घूमने के लिए. अब इंडिया में बहुत सारे रास्ते में खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो इट्स ओनली लॉजिकल कि जब स्पीड ब्रेकर आ रहा है या खड्डा आ रहा है तो हम ध्यान से गाड़ी चलाएं, राइट? Right. स्पीड ब्रेकर पे तुम Absolutely. भुर्र करके निकाल लोगे तो नीचे से नहीं गिर जाने जाएगा वाला. गाड़ी, राइट? हाँ, तो correct, डैमेज correct, होगा, correct. राइट? डैमेज होगा. Right. नाउ लेट्स से डैमेज हो गया है और अब तुम गैराज में लेके गए गाड़ी को, राइट? डैमेज हो तो Right. गैराज वाले ने उसको फिक्स कर दिया. अब गैराज वाला आपसे बोल रहा है कि भाई खड्डे वड्डे ध्यान से चलाना और स्पीड ब्रेकर पे कुदाने की जरूरत नहीं है, नीचे फिजिक्स ऐसा बोलता है कि नीचे से घिस जाएगा. हाँ, okay. है ना? नाउ व्हेन यू काउंटर आर्ग्यू से कि नहीं यार मैं तो खड्डे पे कुदाता ही रहूंगा एंड स्टफ, तो यू आर मोर लाइकली टू गेट द डैमेज अगेन. Correct. Very true. डू यू Yes. तो आप सबकी जो बॉडीज है ना, they are Ferraris or Beetles or Teslas or Land Rovers or whatever for you, and you doing certain habits like living a sedentary life, consuming a lot of sugar or chocolates, or not working out or not doing meditation. ये सारी जो habits है ना, they are like you jumping over speed breakers and rash driving. तो उससे डैमेज होगा. अगर वो डैमेज को रिपेयर करना है और वापस से वो डैमेज नहीं होने देना है, तो यू हैव टू बी केयरफुल. स्पीड ब्रेकर आता है तो थोड़ा चिल से गाड़ी चलाना है, खड्डे वड्डे ध्यान से देख के चलाना है, ध्यान रखना है अपनी गाड़ी का. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड या, it's not an infection ना.
कि कोविड हो गया तो मैं कुछ एंटीवायरस या एंटीबैक्टीरियल ले लूँ तो हो गया। दिस इज लाइफस्टाइल का Hmm. प्रॉब्लम, तो वो लाइफस्टाइल से ही चेंज होगा। Okay. Okay. So we have another question from Taran. Is हम्म there the chances to get any other diseases while suffering from PCOS like diabetes or thyroid? See, yes, Hmm. because if you think about it, PCOS is a hormonal imbalance, Hmm. and Okay. diabetes and thyroid are hormonal imbalances too. In fact, PCOS और diabetes के symptoms are very similar. उनका treatment भी बहुत similar होता Okay. है. Okay. Okay. So yes, there are chances. You will see. I personally see a lot of patients with thyroid and PCOS together. Hmm. So there are Okay. chances. Yes. Okay. But Okay. again, thyroid क्या Yeah. है? Thyroid is again a lifestyle condition. Okay. Yeah. So is diabetes. That's very true. Yes, so is diabetes. Yeah. Hmm. Hmm. Okay. So basically, अभी lifestyle ठीक करो और Hmm. कुछ we don't have any other option. और बाबा मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप हाँ. सब लोगों को, वो बहुत ईज़ी है। लाइक हाँ. नीता, जब से मैं इंडिया वापस आया हूँ ना, तो माय प्लान वाज़ नॉट टू स्टे हियर। माय प्लान वाज़ टू, Hmm. जैसे ही कोविड थोड़ा-थोड़ा खुल जाएगा एंड देन आई विल गो बैक। बट Hmm. माय मम रन्स अ छोटा-सा सत्संग सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन हियर। Hmm. तो हर हाँ. हर Okay. दिन लाइक 10-15 आंटी लोग आते हैं, दे डू सम सॉर्ट ऑफ सत्संग। तो Okay. वन डे द आंटी विल आस्किंग मी कि तू Hmm. क्या करते हो, बिकॉज दे थॉट कि Hmm. मैं डॉक्टर हूँ तो आई बी प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन एंड ऑल। तो Hmm. उनको पता नहीं था, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग देम कि भाई मैं न्यूट्रिशन का काम करता हूँ। तो दे वर लाइक कि हमारा जो Hmm. सत्संग का ग्रुप है, व्हाई डोंट यू सिट विद अस एंड टीच अस हमारे घर Hmm. पे। तो Hmm. व्हेन आई वाज डूइंग दैट, तब मुझे पता Hmm. चला कि ईच एंड एवरी वन वांट्स टू, बिकॉज आई माय फैमिली बिलोंग्स टू स्मॉल टाउन हियर। तो Hmm. everyone wants to be healthy, it's just they don't Hmm. have a right guidance around it. And Correct. तब से आई जस्ट वेंट इन फुल, लाइक मैंने Hmm. मैंने इंडियन फैमिलीज के लिए एक कोर्स, छोटा सा न्यूट्रिशन प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ जिसका नाम है बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट। तो लाइक लेट्स से Okay. यू अटेंड दैट प्रोग्राम, तो Hmm. you will know how you can make your own diet plan, and you can make how you can fix your nutrition for the whole family using Awesome. your That own is घर really का खाना। nice. सो Okay. वो हमने मार्च 2020 में शुरू किया, एंड वी हैव डन Hmm. 300 से ज्यादा फैमिलीज के साथ ये पूरा सेशन। एंड तुम जब Okay. फीडबैक सुनोगे तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरी तारीफ नहीं करती इतनी, और तुम लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। बिकॉज बिकॉज द आइडिया इज नॉट टू, नॉट बिकॉज जब भी हम लोग सोचते हैं ना कि Hmm. हमें हेल्दी खाना खाना है, तो हमारे दिमाग में ब्रोकली और ओट्स आता हाँ. हाँ. है ना? Correct. बिल्कुल एकदम It's बोरिंग not सा. about हाँ. that. You Hmm. don't have to change your घर का खाना. You have to just Hmm. enhance it, and that's what I teach. That's what What do exactly you I mean by teach with the enhance it? Hmm. enhance it। मतलब Enhance देखो, पोहा और मसाले पोहा डाल दो. उपमा, नहीं नहीं, you can add masala if you want to, I don't mind। See, Hmm. Hmm. जब Hmm. वहां पे आता है टेस्ट की बात, राइट? टेस्ट Hmm. कहाँ से आता है? टेस्ट इज बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस एंड द फ्लेवरिंग, राइट? Absolutely. तो Absolutely. Yes. तो हमारा खाना पोहा, इडली, उपमा, डोसा, Hmm. सब्जी, रोटी, दाल, चावल, Hmm. दे आर नॉट अ प्रॉब्लम Hmm. इन आइसोलेशन, दे आर नॉट रॉन्ग। वो Hmm. बैलेंस नहीं है, हमें उसको सिर्फ बैलेंस करना है, दैट्स व्हाट आई टीच। तुम Okay. तुम्हारे पोहा या उपमा या इडली डोसा ही खा के तुम कैसे तुम्हारी डाइट को चेंज कर सकते हो, दैट इज व्हाट माय, लाइक दैट्स द विजन आई एम वर्किंग ऑन। कि आई वांट टू Hmm. हैव वन न्यूट्रिशनिस्ट, not certified, but I want to have Hmm. a nutritionist in each and every Indian family, Every so family. that Hmm. everyone can manage that, because nutrition is something, it's a life skill, you should know। Hmm. तुम्हारी गाड़ी Hmm. तुम्हें कैसे चलानी है, तुम्हें पता होना चाहिए Hmm. ना। You can't just rely on a driver all the time। It's as Absolutely. simple as that। Absolutely. So Right. that's what I'm trying to do here। And yeah, Hmm. So we have a question uh here. hmm. If we are getting our cycles late, is it a problem? See, 5-7 days आगे पाँच पीछे, it's not a big Hmm. problem, but if it is happening Hmm. every month for more than 6 months, you should just Hmm. go and get yourself checked। I think you Yep. all should have That a that. Hmm. habit Hmm. of getting yourself checked from a gynac every six Hmm. months
Just make Okay. friends with a gynec and just go and visit that person. Hmm. Like कुछ प्रॉब्लम Okay. है या नहीं है, यू जस्ट गो Hmm. एंड गेट योरसेल्फ चेक, बिकॉज बहुत सारी Okay. कंडीशंस ऐसी ऐसी होती है ना, वो अननोटिस्ड चली जाती हैं. Hmm. Correct. सो या Hmm. सेम तरन साइकिल विद इन 21-25 days, अगेन थोड़ा सा अर्ली है 28 साइकिल डे साइकिल से. अगेन Hmm. इफ इट इज हैपनिंग ओवर 6 months, you should just go and get yourself checked. Okay. एंड शांता का जो सवाल है, शांता जी का, यस यू Hmm. शुड जस्ट गो एंड गेट योरसेल्फ चेक. एक सिंपल सा सोनोग्राफी लगेगा, मेडिसिन Hmm. शायद तुम मत लो. लाइक तुम जाओ गायनेक के पास, बिकॉज Hmm. अगेन इंडिया में हम फियर का धंधा है ना, हेल्थ इज फियर का बिजनेस. सो बहुत सारे लोग तुम्हें डरा देंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. डोंट टेक मेडिसिन. Hmm. Hmm. 3-4 अलग अलग डॉक्टर से बात करो. वी ऑल हैव अ डॉक्टर इन आवर फैमिलीज कहीं ना कहीं स्टॉक. Hmm. बट Hmm. just don't assume things. अंधेरे में तीर मत मारो. इट कैन गेट टू बिग, लाइक पीसीओडी अगर तुम इग्नोर करोगे तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, यूटेराइन Hmm. कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है इन फ्यूचर. दीज आर द Hmm. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पीसीओएस, एंड दीज आर नॉट टाइनी Hmm. थिंग्स, दे आर बिग थिंग्स. Right. Okay. है ना? So your advice is तो get yourself checked up regularly and रेगुलरली, manage यस. your lifestyle well. Hmm. वेल, Okay. यस, दीज टू. Yes. Okay. Yep. That sounds Be amazing, a and it friend. doesn't Yeah. even sound difficult. Yeah. Yeah. That's not difficult to I do. mean, कितना ही अगर फाइनेंशियल भी है रिस्ट्रिक्शन, तो कितना ही वो 500 रुपए लेगा शायद 6 महीने में एक बार कंसल्टेशन की. Hmm. एंड तुम Hmm. सोनोग्राफी करवा रहे हो तो 1000-1200 रुपए और गिन लो उसका. Hmm. एवरी 6 months, लाइक इट्स बेटर देन यू कंज्यूमिंग पिल्स एवरी डे ना. हेल्थ इज बियॉन्ड Much better. मेडिसिन. And you tend to think of also spending that 500 or 1200 or 2000 is better than actually developing a disease that you haven't known about and then spending it on medicines later, right? So yes, या या definitely prevention is better than cure. Yes. यस. So पहले से जानना is good. Yes. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे ऑडियंस को ये समझना थोड़ा अभी भी डिफिकल्ट है. इंडियन ऑडियंस, आई एम नॉट जनरलाइजिंग हियर, बट दिस इज इन आवर रूट्स. Hmm. गुजराती में कहावत है, पूर आवे तारे पाड़ बांधवानी, यू नो. Yes, absolutely. या सो हाँ. सो दिस इज द कंडीशनिंग, कि जब तक हम Yes. एंड पे नहीं आएंगे ना, डायबिटीज होगा, तब हम शुगर खाना बंद करेंगे. हम शुगर को मैनेज नहीं करेंगे ताकि डायबिटीज ना हो. Hmm. कोलेस्ट्रॉल Hmm. इश्यूज आएंगे तब हम तला हुआ कम करेंगे. हम तला हुआ मॉडरेट Hmm. में खाएं ताकि कोलेस्ट्रॉल ना हो. वी नेवर थिंक अबाउट इट. लंग Right. कैंसर हो गया उसके बाद हम सिगरेट छोड़ेंगे, बट सिगरेट को कंट्रोल नहीं करेंगे सो दैट लंग कैंसर ना हो. डू यू सी Now, द correct. पैटर्न? इट्स ऑलवेज Yes. देयर. तुम Yes. 50-60 किलो ओवरवेट हो जाओगे, उसके बाद यू विल गो Hmm. टू जिम एंड स्टफ. बट हाउ अबाउट यू गो टू Hmm. जिम और वर्क आउट द वे आई सेड 3 to 5 times a week, so that you don't get Hmm. overweight. We have to change the narrative na thoda sa. Correct. So it sounds very easy, Umesh, the doctor. Hmm. The way you say it, it's like really simple. It's a simple thing to Hmm. do, and yet Hmm. I think most of us, and yet we find it difficult to do it. कि ठीक Can है I ना अभी can I अभी क्या give you all a जरूरत है? solution? Yes, Can please. I give you? Always, Okay. always looking Now, for that. Yeah. now the solution is a plan that I've started, Hmm. which is called not a resolution. Okay. Okay, so Okay. not a resolution is a long term lifestyle Hmm. support plan where Hmm. it's again very affordable. I have kept the pricing very very affordable. I'll tell you everything about Hmm. that too. But Hmm. मेरा आइडिया ये है कि आपको मैं न्यूट्रिशन प्लान बना के दूं, आपकी फैमिली Hmm. ओरिएंटेड. तो आप गुजराती हो तो Hmm. गुजराती, सिंधी हो तो सिंधी, राजस्थानी हो तो राजस्थानी, महाराष्ट्र हो तो आपके घर का हाउस होल्ड का न्यूट्रिशन प्लान बना के दूं मैं. Hmm. दूसरा, आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूं, तो आई विल गिव यू अ न्यूट्रिशन मेंटोर. सो आई हैव अ टीम. Hmm. उसमें से एक इंसान आपके लिए एलोकेटेड होगा टू कोच यू Hmm. ऑन डेली बेसिस. आपको कहीं पे भी ऑब्स्टेकल लगा, दैट पर्सन इज अवेलेबल फॉर यू टू रीच आउट. एंड Okay. इट्स नॉट अ महीने का डाइट प्लान कि 2 किलो कम करवा दूंगा, 4 किलो कम करवा दूं. इट्स नॉट गोल Hmm. ओरिएंटेड है ही नहीं. इट्स अबाउट फिक्सिंग योर लाइफस्टाइल
PCOS management, weight loss, सब by product होगा. Thyroid, सब by Okay. product. It will be just a byproduct. It's a long Hmm. term Hmm. thing, and that's it's very affordable. Like affordable in the sense it starts from $2,000 a month, where you are getting your own assistant Okay. Okay. with a new diet plan every month. So, but again, उस पे भी तुमको अभी नहीं जाना है. I Hmm. run this online clinic which is called Simply Wellness again, जहाँ Hmm. पे you can talk to one of my team members for 15 minutes for free. Hmm. So if you want to Okay. book your free nutrition counseling session, जहाँ पे तुम कुछ बाय मत करो, कुछ साइन अप मत करो, just start taking some guide so that start making Hmm. small changes, है ना. तो Okay. in that Okay. session my team member will sit down with you, talk to you about your daily routine, क्या कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, and then give you simple Hmm. tips कि भाई ब्रेकफास्ट में यहाँ की जगह पे ये कर दो, लंच में यहाँ पे ये कर Hmm. दो, पानी थोड़ा बढ़ा दो, ये Hmm. करो, वो करो. You will get simple and Hmm. practical tips in that session which you can start implementing. But Hmm. if you want Okay. coaching, the paid plan. Hmm. But you can always start somewhere. I'm giving you this opportunity to start your wellness journey now. Okay. Yeah, that's there, so you can. This This is is a this is solution right really here. really, yeah, yeah, and it's a very very um, accessible solution. I think that's Yeah. really amazing. Uh, Hmm. awesome. This is really good. Thank you. So we have somebody, Thank an you. expert, who's going to who be guiding us at all times if we opt for uh, Yes. the Yes. nutrition program. The not Yes. Yes. not a resolution. What did you say it was called? not Not a a not a resolution. resolution, because Not a हम सब resolution. रेजोल्यूशंस बनाते हैं फिर एक महीने में चला जाता है, राइट. Right. Right. तो मैंने बोला कि So we ये are not going रेजोल्यूशन to है make any नहीं. resolution. No, it's not. The only goal we are working on is knowing how to maintain our Ferrari in the best possible way. That's what I'm going to teach you. तुम्हें Awesome. तुम्हारी And बॉडी this का वैल्यू Ferrari needs सिखाना to be मेरा काम है. maintained. Yes, that's Awesome. what my That role. that's good. And Hmm. once that is done. And Nita, पिछले 2 साल से I am doing this research कि Hmm. हम Hmm. सब लोग हमें पता होने Hmm. के बाद भी why we Hmm. cannot stick to a nutrition plan or a lifestyle change. Hmm. ठीक है. और Why? Huh? Hmm. वो सारे रीजंस जो आए हैं ना पीयर रिव्यूड स्टडी में से, उसके Hmm. सॉल्यूशंस मैंने नॉट रेजोल्यूशन में डाले हुए Okay. हैं. Okay. तो Okay. तो ये दिस ईयर इज द फर्स्ट कोहोर्ट ले लो या एक ग्रुप, फोकस ग्रुप ले लो, बिकॉज मैं जनवरी Hmm. तक ही सबको साइन अप कर रहा हूँ. फेब से वो Hmm. रजिस्ट्रेशन में बंद कर दूंगा. आई वांट टू टेक Acha. a group of 50 70 100 people and help them for Hmm. a year, because this plan is a year long thing. Okay. Awesome. तो आई एम ट्राइंग दिस थिंग आउट, एंड अभी आज ही मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वो एक टेस्टिमोनियल देखोगे ना, तो यू विल नो. एंड आई वाज लिटरली टीयरी आईज व्हेन शी वाज टेलिंग मी ऑल दोस थिंग्स. Yeah. You should go and check, because I'm so happy the way it's changing people's lives there. So yeah, it's So you is should this try it out. available only for people with families who have women suffering with PCOS or for everyone? इट्स फॉर एवरीवन. मैंने बोला ना कि Okay. वो जैसे तुम लाइफस्टाइल फिक्स करोगे ये सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. सो इट्स लाइक Hmm. एक तीर 100 निशान. Awesome. Awesome. सो This इफ is यू वांट टू great. लूज वेट लॉस भी हो सकता है, पीसीओएस है तो वो भी गया. ये सब कोलेटरल बेनिफिट्स हैं, जैसे तेजल जी Hmm. बोल रहे हैं, ऑफ योर Hmm. लाइफस्टाइल चेंज, बिकॉज दीज ऑल कंडीशंस Hmm. हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल. तो लेट्स से आप में से किसी को थायराइड है, तो आपके लिए वो एक्सक्लूसिव प्लान बनाया जाएगा. ऐसा Hmm. नहीं है कि आपको जेनेरिक प्लान दिया जाएगा. योर थायराइड कंडीशन, योर टेस्ट, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, एवरीथिंग विल बी टेकन इन कंसिडरेशन. सो Hmm. Hmm. दैट्स हाउ इट इज ऑल Okay. डिजाइन. So it's very very customized for each family. Very 110%. Awesome. This 110%. is really good. I think you know, with this big problem that everyone's been facing, and समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, you've come up with a very simple solution. लाख दुखों की एक दवा है जैसे. लाख दुखों So की एक दवा. that's Yes. yes, this is really nice, really really good. We are so happy that you have come up with these solutions, and Thank you. Yeah, my pleasure. yeah, and your talk has been so enlightening and so freeing actually for us, because बहुत सारे प्रेशर्स जो थे वो हेल्दी लिविंग वाले वो सारे एकदम they have disappeared. So it's been really great talking to you. But before we sign off, there was one thing that I had to say.
that ever since we announced the talk with you, we've been getting Hmm. a lot of messages from Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश Wow. वाले, there are some farmers over there who are complaining कि हमारे एप्पल्स Uh-huh. बिकने कम हो गए हैं और डॉक्टर has been screwing with our sales. Yep. Yep. So we said, yeah, Yep. well, yeah. So thank you for being that doctor who's screwing with their sales, because yeah, we'd rather come to you. Yes. Yes. Yes, and Yes. Yes. yes, and we'd love it if you I've come been back getting a lot of on our platform again. 110%. We are coming back with another one, right? Very soon. Yes, yes, and Yes. yes, we are Yes. looking forward to the next talk with you too. Thank you so Yes. much, Dr. Yes. Umesh. Thank you, Thank Nita, you, and thank you, everyone. Thank you, everyone, for joining. Take care. thank you. Bye.